friends, welcome back to CCSP certified channel. Today I am uploading the recording of 30th January. That was fourth class. Domain 1 took total 7 classes. So this is fourth. I have already uploaded 3 classes recording before this. Check that. And just to mention before we come to the recording, there is a promotional activity going from IC Square. Name is Peace of Mind. You might be getting a different offer the time you are watching this recording, but the offer name will be same, Peace of Mind. So current offer going on for it is actually the second attempt, free second attempt, in case you are not able to qualify the first attempt. So current offer is saying that if you enroll by 15 March and give first attempt by 31st, you will get a second free attempt by 31st May. So similar offers IC Square gives in almost every alternate month. So this is March month offer going on. Next offer might be in end of April or May month. And if you want to get ready for these offers, better you enroll for any of these classes. So either you can write me at the ccspcertified@gmail.com to enroll for my batches, or you can ask for these recordings. So I have uploaded all the recordings. I can grant access to you with some nominal fees, and I will along with this I will give the question bank and the slides and the guidance also. So let me know whatever way works to you. Now we jump to the recording of the day 4 that is started from the module 3. Okay, so we is starting now the module 3 and it has different components. We'll start with the cryptography. So first there is a networking perimeter we quickly discuss. So in on-premise we always define a fixed network perimeters like who will access our services. And in private cloud also the perimeter is clearly demarcated because we have a full control. For other clouds like public cloud, the perimeter transfer in a series of highly dynamic micro borders around individual customer solution or services. So in other cloud there is no clear perimeters at all because it is publicly available, publicly defined, and those clouds are in the public network. So security is very important in that case because where there is no control who can access from where, it will be very important that the cloud should be secure. And the security, one of the best way to implement security is in cloud is encryptions. So we have seen that there is some data, input data and output data. It was readable, it was not readable. There is one engine, there is a key, and that are the main components. So data, engine, and key. So any cryptography algorithms which is associated with the encryption algorithms, these three are main components. And we have seen this also in very starting days. What encryption helps? Encryption helps in the confidentiality. So it gives a read permission. So it restricts the read permission. No one can read the data. Then it requires encryptions. We have seen the integrity. There's a hashing algorithm that helps in the write or modify should not happen on the data. And we have seen the non-repetition. There's a digital signature. And we have seen the few algorithms. Symmetric key encryption we have seen. We have seen the encryption has two algorithms, symmetric, asymmetric. AES, DES, 3DES are the example of symmetric key. Industry mainly use AES algorithms. Asymmetric key we have seen RSA, DFM, and ECC. Those are the asymmetric key algorithms options. Hashing we have seen SHA-1, SHA-2, MD5. Now we just see the digital signature also. So we have seen there is a digital signature need a private key by the center. So all the asymmetric key algorithms can be used as a digital signature algorithms, but there is a ECDC DSA, electrical curve digital signature algorithms, and there's only used for digital signature. It is not being used for any other purpose, confidentiality or integrity. It relies on the discrete logarithm problem, and it uses a smaller key to create the same level of security as any other digital signature algorithm like RSA2. So they have asked ECDSA once in the test paper. That's why I have explained it more. So it is algorithm which is only used for the digital signature purpose.
And all the asymmetric key algorithm can be used for the digital signature. So this is the quick recap and just last thing. Ravi, did they ask how these algorithms work? Okay, so then it will be cryptographic whole subject, but okay, I quickly explain this. When there is a data comes, the engine is always fixed. Let's say mainly all these algorithms work on the majority of the algorithms works on the private prime numbers concepts. So whether it is RSA or it is AES or even other algorithms, they have a multiple rounds of the interactions, like around RSA use 20 rounds. So when a data comes and the keys there, they are the 20 rounds of X operation or operation plus minus. Those are defined within RSA algorithms. And in the end, the keys are mainly key pair, public key pair key are the co-prime numbers normally in industry. So I explaining RSA, though it will not be asked in the exam, but let's say there is a big number, any big number they take, and they created two prime of that number, two prime factors of that number. Let's say 6 is a number, then they 3 and 2. 3 and 2 are two co-prime. Co-prime means they don't have any common factor in between. So 6, let's say 6 is a keyword. They have taken a number. They created two prime, 3 and 2. 2 will be a public key, 3 will be a private key. Because 6 is not known to anyone, 3 and 2 can be create a 6. This how the so whole cryptography lies on the use of the prime numbers, how good you can define the prime numbers. So you when you will read about these algorithms, you will see it later, but as a course, it will be a different story altogether. Then it will be again 4 or 5 days you have to spend. But I can give some good videos recording that you can see how this cryptography algorithms working and they are being developed, how they are being developed. Okay, so I Okay, will but they extrude don't some ask videos. questions regarding how these No, algorithms. so as I mentioned that because they are asking all the topics, they don't want to master of any of these topics, they want jack of all. So they want at least what is AES algorithm is, purpose of AES algorithms, or how the confidentially achieved. So their questions, if you have seen the questions, they don't go in deep, but they expect that you should be sound good in the concept. So concept wise, there is encryption algorithms, what it do, there is a hashing algorithms, what it do. They expect this much only in the exam. So exam wise, I will give enough knowledge. So exam will able to you will able to crack with that knowledge. But if you need more knowledge, you can reach me. I will give more videos to you to watch. Okay. Okay. So quick recap: symmetric key is simplest, fastest in industry accepted algorithms. Even the as I mentioned, Germany army used it sending private messages during World War II. But the key distribution and non-repetition is a challenge. That who is sending the data, because both are using the same key. Non-repetition and the key distribution is a bigger challenge. Asymmetric key solve the problem of exchanging of the data by creating two different key pairs, public key and private key. And we have seen that if Alice wants to send privately message to Bob, she can use Bob public key. We have seen encryption use the receiver's public key. So sender keys will not play a role in encryptions. Sender key will only play a role in non-repetition. So Bob's public key to generate a ciphertext. Bob can use own private key to decrypt it, and no one else know the Bob's private key. So there is no possibility that message get decrypted. But there is a one here. It is very important. Alice using the Bob public key, so no one can read it. But how Alice know that Bob public key is right, or where is the Bob public key? So we'll see in the next slide. Uh, so Alice need to know the Bob's public key for algorithms to work. Otherwise, if Bob's public key is modified or get changed, this is known as a man in middle attack. There is a chances that Alice using public key which is not Bob's public key, and she can send a message by encrypting it. Someone else can read it. So we'll see in the next slide. Now there is a hash we have seen. Alice Alice can use the hash function to create a digest, and the digest is always of fixed length. Whatever the length of input does not matter, and it can send along with the message, and Bob can decrypt the message, regenerate the digest. We have seen that checksum. So along with the checksum,
the integrity can be ensured. So might be you have seen later. Uh, Sorry, I forgot the name. Sorry, Karthik, you might have seen that checksum in the when you download any page in the website. Right, You, right, right. I checked it. okay, you check that. And there's a last concept that digital signatures. So L is sender must use own private key, and it's not a signature to make sure that source is correct. There is a source authenticity. There's not a digital signature. There's no digital certificate we have seen. It is a digital signature. So today we are starting the new topic. This is public key infrastructure. Is very, very important. Exam will not ask more question. Exam will ask one question maximum here. But the next concept TLS, there will be 5 to 6 questions from TLS, and until unless you don't understand PKI, you will not able to understand digital the TLS concepts. So you have seen that security of the crypto systems lies on the keys. And public keys are open and publicly accessible because everyone has to use public key before sending the encrypted message. So public keys are kept on open, but it has become very hard to know if the key is correct and what is being used for. The purpose of key must be explicitly defined. Public key infrastructure affirms the usage of public key. The public, if you see, the PKI stand for public key infrastructure. So it's only work on public key. First thing, its purpose is to make sure the public key is correct, and this the purpose of the public key is defined properly. So public key infrastructure PKI is a governing body behind issuing digital certificates. Now, first time you have seen the digital certificate keyword. It is also known as public key certificate. So what is digital certificate? Actually, it is public key itself, but public key along with some information that we'll cover in the next slide. But in the end, digital certificate give me the public key. So when there is a digital certificate issued by PKI, it is actually a public key for me. Because they have a job of issuing, storing, and revoking of the digital certificate. So three important entities here: digital certificate, certificate authority, and registration authority. CA, RA, and digital certificate. So we'll cover them. What is DA, CA, what is RA, and what is digital certificate. So CA, so CA is CA are the ultimate authority. First thing, CA are the publicly trusted authorities like VeriSign, Semantic, and their fees need to be paid to them for their, and they need to do identity proofing. So CA are the one who actually issue the digital certificate, and they charge some fees for issuing the digital certificate. And before they issuing the certificate, you have to give your identity proof to them. Might be Aadhaar card, like say same way like someone authorize you, someone give the signature that you are the Ravi Agrawal or you are the Karthik. Then they ask some proof, like you show me first, then I will give the certification, that I will make sure that whenever you show this that I am a Ravi Agrawal, it will be trusted. So they are the publicly trusted authorities, and they charge fees, and they do a identity proofing also, and then they can be internal authority also. So they are publicly authority can be outside, those are fees charge, or there can be internal authorities, those are the self signed. Let's say in my organization I need a proof that I am a trusted person. In that case, I can use the self-signed or internal C authority. They give me signature. Now I'm giving you more layman language, but in industry, when you hit a website, when you hit a website, let's say www.google.com, Google, no one know that Google is the company who that's serving the page, is the trusted page. Then it is a CA who we trust, and we see the signature associated with that website that is been listed here, and that is a CA is who has signed this SSL certificate, TLS certificate, that we'll see in the next slide. And then we'll make sure, yeah, it is correct. If it is the application is used by intranet only, let's say for this employees portal, the Wipro employee portals that is created, that will be used on internet for the employees only. Then if they are internal user, why should I pay fees to the external CA? I can use an internal self-signed signature, and that can be accepted by all the employees within the organizations, and there is no need to pay fees to the external CA. So hope you are correct on this one. We'll see the TLS again in next slide how the website works, but hope this is CA's role is correct.
It can be external, can be internal, correct? Okay. And any query, otherwise you go to next one. Yes, Ravi, clear. Okay. So so that this is the private public key now. Who will issue the private key? Because public key, private key is a pair one, correct? So if the private, if user can generate own public and private key pair, because there is option either user can generate from own public key and private key, uh, then it send on its own public key for issuing digital certificate. Like say there is a tools available there. There are key generation tools are there. I can run then I can generate my public key and private key. But my public key is not available to anyone in the industry. No one knows my public key because I have run it. It is with me. Then I go to CA that this is my public key, issue me a digital certificate. They will give me a digital certificate. My public key will store there. And whenever I will give my digital certificate to anyone, it will get verified with the central authority. So this is one way. And the centralized environment, CA can also issue public and private key. If you see CA job is not only sign them, CA can also issue public and private key. I will store my private key in my server, and I will from public key I will get a digital certificate. So CA will issue a digital certificate and a private key. And this is the so when you raised a CSR request to CA for a key, then they give a two certificate. One is server certificate, one is client certificate. Industry known them as a server certificate, client certificate. Server certificate is a private key that you install in the server. The reason is that ultimately the server is one who will hold the private key. No one else hold the private key. Private key is a secret that is known to you only. And the client certificate is a public key that you issue for everyone. That is whenever when you want to ask that what is a new SSL certificate, the old SSL certificate is expiring, or old TLS certificate is expiring, then you renew the certificate by help of CA authority or the self-signed authority, internal authority. You get a two certificate. One is for your server to install, and one used to give to end your application, load balancer, or database, all the receiver applications. They will get your public key or digital certificate. Is it clear? We'll see again, but hope this is clear so far. Any query, you stop me, because those are very important topic to understand in terms of the cryptography. So public key and private key is clear, and because public key is required for the encryption we have seen, so that's why we are doing all these things. Now come to digital certificate. Industry also known this is X509 certificate. They ask that what is your X509 certificate? It is actually a digital certificate. So X509 we have public key along with some other information. What is this information? This information like public keys of the Ravi Agrawal, and when it was issued, what was the date, and others, and how long it will be valid, and other information of the organization. So public key plus information, and that is been digital signed by CA is very important. So why we have done this one? Because this public key is trusted only because when if it is coming from the CA. How the CA will make this task? It is same like the how the king used to send a letter to the Senapati. King used to seal and signed. Then only someone know that yeah, it is coming from the king only. It is not coming from anyone. If this public key is an envelope that is being sealed and signed by CA, and see how it can seal and sign. It is by our own private key. So this is what we have seen as a digital signature concept here. So digital certificate use digital signature concept also. Digital certificate use the public key of the end party, and then CA signed it with own private key. Very important to understand. Is this clear now? Why CA will sign it? The signing will be by the CA's own private key, right? Yeah, Mm. always sees. This is very important. Signing always will happen with own private key. Otherwise, sign it will not known as a sign. आपका Okay. साइन आपके पास ही, अदरवाइज कोई भी साइन कर लेगा ना उसको. सीए को ट्रस्ट कर रहे हैं हम. If CA has signed with own private key, it become a digital certificate. And why CA signed? To make it tamper-proof, to ensure the source authenticity.
Digital certificate provide assurance that entity they are communicating with are who they are claimed to be. डिजिटल सर्टिफिकेट अश्योर करते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो पर्सन वही है क्योंकि उसकी पब्लिक की को सीए ने साइन किया है और ये मेन इन मिडिल अटैक रोकने के लिए है ताकि मेरे पास जो पब्लिक की मिले यदि वो सीए साइंड है तो इट मस्ट बी ऑलवेज करेक्ट अदरवाइज वो सीए साइन नहीं है वो सेल्फ साइंड है या कुछ और साइन मतलब किसी और एंटिटी ने साइन किया है देयर आर चांसेस कि पब्लिक की मॉडिफाई हो चुकी है ठीक है अब यूजर व्हेन द रिसीवर हाउ द रिसीवर विल पब्लिक की को उसको पब्लिक की नहीं मिली उसको डिजिटल सर्टिफिकेट मिला जो कि साइन डिजिटल सर्टिफिकेट है करेक्ट उसको उसके अंदर पब्लिक की उस इनवॉल्व के अंदर तो व्हेन यूजर वेरीफाई द सर्टिफिकेट इज साइन बाय अथॉरिटी दे नो द पब्लिक इज लेजिटिमेट ये तो हमने कवर कर दिया अभी सो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें सो व्हेन द रिसीवर रिसीव द डिजिटल सर्टिफिकेट and they are coming from the trusted CA. Trusted CS public key is available everywhere because again the public key comes in the picture. They will use trusted CA public key to verify the signature, and then they use the keys. So we'll see again, but we come to RA now. What is role RA play? Because CA is playing all this role. RA is a sort of middleman or license certified distributor that handles CA tasks like processing certificate request, authenticate user identity proofing, revocations. So RA is like CA. RA नहीं भी हो तो CA सब काम करेगा जो ये है, but RA is like गैस डिस्ट्रीब्यूटर. तो आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो यू डोंट गो टू HP और भारत गैस डायरेक्टली. यू गो टू डीलर. डीलर आपका आइडेंटिटी प्रूफिंग करेगा और आपको गैस सिलेंडर एंड में इश्यू करेगा, पर अल्टीमेट इश्यूइंग अथॉरिटी हमेशा CA है. So RA will only to assist CA in many of these tasks which CA must have to done. Okay. So RA is role of the middleman or the license certificate distributor. If you see the distributor role. If RA grant the request, it passes to CA, we generate the digital certificate. If no RA involved, CA perform all these tasks alone. And where this public, actually we have seen this digital certificate आ गया आपका, and you have given to other parties from where they will verify this. There is a repository there. The digital certificate repository is the database of the digital certificate and the public keys. Correct. So there is a repository for all the digital certificate and the public key associated with them available online, where you always collect the or verify the keys, public keys. अभी क्लास कंसेप्ट है चेन ऑफ ट्रस्ट का. You might have seen that certificate जब भी मिलता है उसमें मल्टीपल रूट सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद उसका चाइल्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं और चेन ऑफ ट्रस्ट होता है. तो रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो होता है रूट सीए, एक रूट सीए होता है, एक सबऑर्डिनेट सीए होते हैं. वो कैसे होते हैं? रूट सीए अथॉरिटी इज द ओनली अथॉरिटी दैट साइंस ओन सर्टिफिकेट. तो जो सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट होता है एक जैसे इंडस्ट्री में होता है, सीएस भी ऐसे सीए होते हैं, एक सीए को दूसरे ने वेरीफाई किया, दूसरे को तीसरे ने किया. अल्टीमेट जो सीए होता है जो तो रूट सीए कहलाता है, वो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करता है बिकॉज नो वन इज देयर टू सर्टिफाइड दैट सीए, बट इंडस्ट्री एक्सेप्टेड हिज सेल्फ साइन सर्टिफिकेट. So root certificate authority is the only authority that sign own certificate. The subordinate CAs are signed by the root certificate. If you see, the subordinate CAs are signed by the root certificate to give them that yeah, this root subordinate certificate is a trusted subordinate. So they are being signed by their root CAs in the same way the path happens. And there can be a the hierarchy subordinate CA again, subordinate CA again, subordinate CAs. So ऊपर वाला नीचे वाले को साइन करता जाएगा. अल्टीमेटली द रूट सीए इज वन हु साइन इट. अब कैसे फ्लो चलता है? व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट दैट इज सिक्योर ओवर HTTPS और TLS, द सर्वर फर्स्ट सर्वर सेंड ए डिजिटल सर्टिफिकेट टू द ब्राउजर. हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने जा रहे हैं. चलो मैं जल्दी पढ़ता हूँ, देन वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. द सर्वर सेंड ए डिजिटल सर्टिफिकेट टू ब्राउजर बिकॉज सर्वर को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट देना पड़ता है द क्लाइंट को. The internet browser compared the issuer with the list of the trusted authority CS, root CA. हर ब्राउजर में जो trusted CAs होते हैं उनकी लिस्ट होती है already. So they already have the list of all the trusted root certificate. This root CS certificate is they have. If a match cannot be found, the client browser check to see whether the
whether a trusted root CA is signs the issuing certificate, then browser chaining engine continue verify the issuer of the e-certificate until it find a trusted root or upon reaching the end of the trust chain. So when you hit www.xyz.com, that is on HTTPS, then first it comes a digital certificate. This is a public key. Public key is required because the exchange of the information between root CA and the browser should be over secure. It is HTTPS. And when browser send a request to the server, what they need a server's public key. Are you getting my point? हमें if the server if the browser is a verb here, let's say alias is a browser and verb is a server. ब्राउजर को सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजना है तो उसको सर्वर का पब्लिक की चाहिए. Then only browser can send an encrypted message because there is no human involved here. Here the machine involved and the browser involved. If the browser need a public key, first browser take the digital certificate from the BOPs, verify it whether it is have a valid public key or not. So how it verify? It verify by chaining concept. So first whether it comes with a this digital certificate comes with a signature. So if the signature is coming from the root CA directly, that's fine. We accepted it. But it might be coming from the subordinate CA. Then it check the chaining concept that if subordinate certificate is signed by whom? Subordinate certificate 2, subordinate certificate 3. Till the end, they found the root CA certificate. This is self-signed in that chain. They keep it checking. If they found it, they accepted request. Otherwise, they discard it and throw a message that the connection you are making is not secure. So Ravi, VeriSign semantics are the subordinate. No, they are root CA. They are root CA. Okay. ओके तो वो उनका सिग्नेचर ब्राउजर में अपने आप ही है क्योंकि वो इंडस्ट्री एक्सेप्टेड है. ब्राउजर उनका सिग्नेचर जानता है, करेक्ट, उनकी पब्लिक की रखता है और वो उनको वेरीफाई कर सकता है. परंतु बाकी सबऑर्डिनेट सीए रोज आते हैं, रोज नए नए सीए बन रहे हैं जो सबनेट हो रहे हैं और वो उनको रूट सीए सर्टिफाइड कर रहा है. पर ब्राउजर को जब तक रूट सीए नहीं मिलेगा वो कीप ऑन चेकिंग दैट वन. वो चेन होती है, जब भी सर्टिफिकेट इशू होता है वो चेन में होता है, इसीलिए क्योंकि सब रूट सीए अकेला सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता. दे नीड मल्टीपल हेल्प्स, तो मोर सबऑर्डिनेट सीएस बनते जाते हैं ओवर द टाइम. हम इसको एक बार अब टीएलएस फ्लो पढ़ेंगे, उसमें इसको और डीप में देखेंगे. तो ये अभी यह क्लियर है? हेलो, यस. सो क्विकली हम पीकेआई देख लेते हैं जो सर्टिफिकेट सीएसआर रिक्वेस्ट होती है. सो कहाँ से चालू होगा ये? ठीक है, वेरीफाई होता है. जो सेंडर होता है, सर्वर होता है, ये साइंड ये सेंडर हो जिसको अपना साइन करके भेजना है, डिजिटल साइन करके सेंडर को भेजना है अपना डेटा. ये रिक्वेस्ट करता है आरए के पास. दिस इज नोन एज सर्टिफिकेट सीएसआर रिक्वेस्ट करता है. यदि रिक्वेस्ट ओके होती है, इफ आरए वेरीफाई दी आइडेंटिटी प्रूफिंग करने के बाद रिक्वेस्ट जाती है सीए के पास. सीए सर्टिफिकेट इशू करता है, प्राइवेट की सर्टिफिकेट करता है जो कि सर्वर पे स्टोर होती है, और जो पब्लिक की होती है वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है. व्हेन देवर रिसिपिएंट्स को अपना जब वो डिजिटल सिग्नेचर देता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाके उसको सिग्नेचर वेरीफाई करा लेता है. यदि होता है तो वो पब्लिक की एक्सेप्ट कर लेता है और ये फिर पब्लिक की यूज होती है रिसिपिएंट टू सेंडर मैसेज कम्युनिकेशन में. ओके रवि, इसमें जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये सिर्फ प्राइवेट की दे रही है, पब्लिक की क्यों नहीं दे रही है? पब्लिक की उसको यहाँ देना है. पब्लिक की एक्चुअली पब्लिक की वो प्राइवेट की दे रही है और सर्टिफिकेट दे रही है. सर्टिफिकेट इज डिजिटल सर्टिफिकेट. पब्लिक की एक्चुअली पब्लिक की अलोन कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो डिजिटल सर्टिफिकेट लेके आए हैं क्योंकि पब्लिक की ट्रस्टेड नहीं थी मार्केट में. तो डिजिटल सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट दिया ना, सर्टिफिकेट दिया और प्राइवेट की दी. सर्टिफिकेट ये जो है ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये पब्लिक की एक्चुअली, करेक्ट. ये एक की बाहर है और एक सर्टिफिकेट है.
ये की तो है प्राइवेट की और ये सर्टिफिकेट है डिजिटल सर्टिफिकेट। गेटिंग माय Okay. पॉइंट? And Karthik, C authority, when they are storing the data in verification authority, they are also sending a public key. करेक्ट, हाँ, यहाँ भेज रही है कि यहाँ आपके पास रिक्वेस्ट आए तो आप पब्लिक की वेरीफाई करके और रिसिपेंट को ओके कर दो, तो रिसिपेंट इसको यूज कर लेगा उसके बाद उसकी पब्लिक की को। यहाँ पे वो सब है, पर यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दे रही है और की दे रही है प्राइवेट की। गेटिंग पॉइंट? Okay. एक क्वेश्चन कवर करते हैं क्विकली, फिर अगला नेक्स्ट मेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर देना एवरीवन, ट्राई दिस। Okay. And first option. First option. अभिषेक? Yeah, क्यों you are फर्स्ट seeing ऑप्शन? that question. करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो The first डेफिनेशन ही option है। is correct. हाँ, वो तो डेफिनेशन ही है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देखो, पब्लिक की अथॉरिटीज कैन नॉट बी रिमूव यूजर ब्राउजर। हम हमेशा अपने इसमें हटा सकते हैं, हमको ट्रस्टेड नहीं हो, हमको लगे नहीं कि पब्लिक की सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है वो करेक्ट है, हम वो भी एक एक्सपायर हो जाती है, सॉरी, सर्टिफिकेट इशू बाय पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक्सपायर आफ्टर पीरियड इनएक्टिविटी की बात नहीं होती है। आपके वो 1 साल की एक्सपायरी है तो आप इसको यूज ना भी करो नहीं 6 ऐसा महीने होता है। तो वो हाँ, पड़ा रहता है। और आर ए कैन नेवर इशू द सर्टिफिकेट, हम्म, correct? So this is one of the example question we have collected from CARA, but यहाँ इतना deep question यहाँ से नहीं आता, deep question यहाँ से आता है। तो थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, क्या टाइम हुआ अभी? ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये अब वो देखते हैं जो जिसपे से हमको 5 क्वेश्चन करीब यहीं से आएंगे। तो हम आज का जो लास्ट डिस्कशन है वो क्लिक कवर करते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस TLS SSL पे आएंगे। आई विल कवर फ्यू सैम्पल क्वेश्चन आल्सो पोस्ट थ्योरी, तो हम उनको कवर करते हैं। So far we have seen PKI, public key infrastructures, and the only purpose of PKI is to ensure that private key that's required for encryption is being exchanged securely. There is no man in middle attack happens. Public key जो आपके पास पहुंचे वो उसी की हो जिसको वो रिसीवर की हो जिसको डेटा भेजना है आपको। पब्लिक की का पर्पस ये था। अब TLS क्या होता है? अब हमने देखा कि डेटा इन रेस्ट होती है, AES एल्गोरिथम होता है, डेटा इन ट्रांजिट TLS that we'll see, and data in use we have seen trusted execution in class TEE. Quickly we just show. Ravi, are you sharing something? Oh, is it not shared? Oh, sorry. Yes, I'm sharing something. Let me share it again. Is my PPT visible to you guys? Yes. So we'll starting TLS and SSL, and this first thing we have seen that data in REST, there will be encryption algorithms. The symmetric AES is industry accepted, used by many of the CSPs. And just we quickly show the Oracle document. This is their how they secure their object storage, and all data and objects are encrypted with at rest using AES 256. Encryption is on by default and cannot be turned off. So all the CSP is storing any data either in object storage or the file or the volume or any other place. They always, if it's in rest, they always use AES, that is symmetric key algorithm. Okay. Now we'll cover TLS. When there is a movement of data from object storage, say VM, or from client to CSP, all is over TLS. How the TLS work and what is TLS? We'll cover this. So TLS and SSL are two most well-known cryptographic applications for data in motion. So data in transit or data in motion is secure via TLS. So what is SSL? So SSL is a very starting phase of TLS, secure socket layer. It is started with 102, 202, 302, and there are some attacks happens on this. Then they started the same
new version with the new name TLS. Now it is 101 is also deprecated. 102 and 103 are used in industry, and 102 is quite accepted as of now. 103 is still new in and it is not being moved. Industry has not moved to TLS 1.3 as of now fully. So industry using TLS at least 1.2. So when there is a there are website when you hit if it is on TLS 1.1, browser itself say it's need to be migrated to TLS 1.2. It found a vulnerability that is on the deprecated TLS versions. So all the HTTPS connections, all your website you hit, whether it is banking website or any website which is on HTTPS, the TLS handshakes or TLS record works. So what is as I mentioned previously, also there is a public key and there is a that symmetric key and asymmetric key. Asymmetric key is best to use, but very slow. And when you hit a website, uh, if it is very slow, you don't move ahead. Then you need a symmetric key to uh, to to secure the connection, and it is 1,000 or even 10,000 times faster than asymmetric key algorithms. But the biggest problem was in the symmetric key how to exchange the key. So the key exchange happens via the TLS handshake. So TLS handshake use public key algorithms to set up symmetric keys. So so there are two steps. Even CCSP exam ask key setup happens in which step? It is the handshake steps where the key setup, and which type of key setup? It is symmetric key setups. So with the use of symmetric key, the data can be exchanged, and that is known as TLS record steps. So hope these two steps are clear. There's very important steps. How it works, we'll see this. But the handshake steps, the use of public key algorithms to set up the symmetric key. And what public key algorithm is? Sorry, asymmetric key or public key algorithms. In that case, you use the receiver's public key to send a message. Hope there's no need to recall this, but I quickly recall this again. So in symmetric key, both the keys are same. So for sending is a message, but in asymmetric key, you use the receiver public key to send a message. So we use the receiver. First, we need the receiver public key. And once we have a receiver public key, we can use it to send a message. And that message will use to set up a symmetric key. So first if the public key of the receiver is involved, then the digital certificate is involved. Because until and unless public key is not known to me, I cannot send a message to the server. So how we start? Client send a hello message. This is cloud like browser. Browser send a hello message to the server. This is very step first. And the server send a hello message, including its own certificate, digital certificate. You understand? Because it want to send a public key to the client, and it can also request a client digital certificate, but that's not a mandatory step. Step 3 is not a mandatory step. The reason is that client may not have its own digital certificate. Correct? Client may not be using public key private key pair. So client certificate is not a mandatory steps. Though it can be requested by server if it is trusted client is there. But let's say there is a client request, also certificate request is there, and server say hello along with own certificate. Those third and fourth are not or optional step. Fourth, client may send its certificate, or if it is not there, it cannot send it. But fifth stage is very important step. Client send a key. What is this key? That we'll see in the next slide. But client send a one portion of the key. Let's say ABCDXYZ is a key. Client will say ABCD, and and it is encrypted with the public key of the server. How client will get the public key of the server? Any idea? How the client know the public? From the first second step. Second step. So client have a digital certificate. They go to CA authority. That CSR request. Oh, sorry. Verifying authority. They will get a verified. Yeah, it is trusted certificate. They will get a key, and they send it
by encrypting that public key of public key. So this is public key encryption algorithms start. So the ABCD is sent by client to the server, and since client has own private key, client can have a ABCD. Server also has ABCD. Client has also ABCD, and certificate verify. So this is the portion of the 3 or 4. So if the client set a certificate, SSL that server can also verify the certificate of that client. But 3, 4, and 7 are 3, 4, and 6 are optional steps. So leave them as of now. So client has sent a key with the private key encrypted with the private key of the server, and the server finish the message and send a finished message along with the encrypted with the symmetric key. How the symmetric key happens, setup happens in these 6 and 7 steps. We'll see next step, but we'll come again to this in the next slide. We'll go first to next slide. Again, we'll see this again flow. So let's say client has a string ABC, server has a string XYZ, and there are 3 strings. There is a pre-master 1, 2, 3. And let's say logic of the session key or the symmetric keys, take first 2 character from the client secret, first 2 character from the pre-master, and last 2 character from the server secret. This also known as server secret or server string, client string, server string, and pre-master. So in the handshake or the key setup steps, there are 3 strings involved. One is client string, one is server string, and the pre-master. And let's say algorithms for the symmetric key creation is take first 2 steps from the client, then first 2 steps from the pre-master, and last 2 steps from the session. Key creation is quite complex than this, but I'm taking this example for the simplicity. So when client send a hello message, so along with the hello, it sent the version, client support the version of the TLS because TLS 1.1, 1.2, 1.3, and SSL 1.1, 1.2, 1.3 is there. So SSL 1, 2, 3 is there. So client said which TLS version I support along with the hello. So hello is not plain hello, the version of, and the cipher suit supported. What is cipher suit? Cipher suit is this TLS also. We have seen this, it is using public key and private key. So which public key or I support, I send. Do I support RSA or I support Diffie Huffman? So this is cipher suit associated with this TLS, correct? Because in the end, I need this this algorithms when I send a when I send a message in this step 5, because when I send a message encrypted with the server's public key, which algorithm I will use for encrypting this, I should know, correct? Until unless मुझे algorithm पता नहीं है, मेरे पास की आ गई है, पर algorithm ये होगा, तो वो मैं TLS भेजूंगा, मैं वर्जन कौन कौन सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की algorithm कौन कौन सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरी क्लाइंट का जो रैंडम सीक्रेट है ABC ये है. तो क्या भेजा उसने, हेलो I am supporting TLS 1.2 and in public key algorithms I am supporting RSA and my client string is ABC. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको समझना बहुत जरूरी है. यहाँ तक क्लियर है? ABC चला गया, साइफर सूट चला गया और TLS का वर्जन चला गया सर्वर के पास. अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर इनमें से एक साइफर सूट सेलेक्ट करेगा जो 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 TLS वो भी सपोर्ट करता है. लेट्स से सर्वर सपोर्ट करता है TLS 1.1, 1.2, बट जो लेटेस्ट TLS है वो सब सेलेक्ट करेगा इसमें से. यदि क्लाइंट भी सपोर्ट करता है, वो जो साइफर सूट जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इनमें से, तो सर्वर विल सेलेक्ट द साइफर सूट. और सर्वर जब अपना रिस्पॉन्स करेगा हेलो में सेकंड स्टेप में, तो वो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जो कि X509 सर्टिफिकेट वो भेजेगा. उसने जो साइफर सूट सेलेक्ट किया कि मुझे आप जब 5वीं स्टेप में एन्क्रिप्शन करके भेजो तो इस एल्गोरिथम से भेजना, वो उसने सेकंड में बताया, और सर्वर की स्ट्रिंग चली गई. तो सर्वर की स्ट्रिंग मतलब XYZ इधर चली गई और ABC इधर चली गई. तो क्लाइंट के पास है ABC XYZ, सर्वर के पास भी ABC XYZ, और ये नॉन ट्रस्टेड चैनल पे हुआ है. तो कोई हटेकर है, वो मिडिल में बैठा है, उसके पास ABC भी है और XYZ भी है. So client has ABC XYZ, server has ABC XYZ,
The attacker has a ABC XYZ. This is the first two steps followed. यहाँ तक क्लियर है? रवि एक चीज पूछनी थी। ये जो सपोर्टेड साइफर सूट रहेगा, राइट, तो ये सब एसिमेट्रिक की करेंगे कि सिमेट्रिक की करेंगे? असिमेट्रिक के एसिमेट्रिक। अभी से असिमेट्रिक चल रहा है, सिमेट्रिक के भी रहेंगे एक्चुअली, पर पहले जो सेलेक्ट करना, एक्चुअली एंड में भी हमको सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन भेजना है, पर फर्स्ट हाँ वैसे सिमेट्रिक असिमेट्रिक दोनों के होंगे, सॉरी पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा, बाद में सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो जब सेलेक्ट करेगा कि मुझे असिमेट्रिक ये सेलेक्ट करना है, सिमेट्रिक ये करना है, क्योंकि मुझे एक सिमेट्रिक की का ही भी यूज करना है जब मैं रिकॉर्ड स्टेप करूंगा, और असिमेट्रिक का करना है। तो एक सेकंड, टीएलएस के जो साइफर सूट होते हैं मैं क्विकली दिखा देता हूँ। TLS 1.2 साइफर सूट्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये ECDS इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल एल्गोरिथम्स AES वाले भी हैं। हाँ, ये AES है, और शाह वाले भी हैं, ये सब साइफर सिर्फ सूट है। पीपीटी दिख रहा है और RSA भी है। अच्छा, PPT भी दिख रही है, एक सेकंड पीपीटी दिख रहा है। दिख रही है, ये मेरी ब्राउजर दिख रहा है। हम्म TLS साइफर सूट दिख रहे हैं। हम्म तो TLS साइफर सूट्स कौन कौन से हैं दे रखे इसमें, देखो ये AES भारी लिखे हुए थे यार भाई। हाँ, ये TLS 1.2 सपोर्ट करता है, जिसमें ये AES वाले भी हैं, RSA वाले भी हैं, करेक्ट। और एज आई मेंशन, RSA एल्गोरिथम्स डिजिटल सिग्नेचर में भी काम आ सकती है और इंक्रिप्शन में भी काम आ सकती है। तो वो क्या करते हैं, RSA प्लस SHA कर देते हैं, तो ये हैश भी हो गई और ये इंक्रिप्शन में भी काम हो गया। और ECDC इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल एल्गोरिथम्स, तो विथ लिख देते हैं, मतलब ये एल्गोरिथम AES में हमने देखा था कि AES के पास डिजिटल सिग्नेचर की कैपेबिलिटीज नहीं है, AES सिर्फ इंक्रिप्शन कर सकती है, सिमेट्रिक की है। पर ECDSA के साथ आ गई तो इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर, इलेक्ट्रिकल डिजिटल एल्गोरिथम हमने देखा था वो डिजिटल सिग्नेचर कर सकती है, तो ECDSA विद AES आ गई। तो पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों साइफर सूट है इसमें, करेक्ट। अच्छा, तो मतलब ये पूरा जो सूट है ये पूरा ऐसे अंडरस्कोर इसी फॉर्म में जाता होगा, क्लाइंट हाँ हेलो जब हाँ करता है। हाँ, कि मैं क्या क्या सपोर्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे इंक्रिप्शन में क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पब्लिक की में क्या इंक्रिप्शन में क्या क्या चाहिए, प्राइवेट की इंक्रिप्शन में क्या क्या चाहिए। और पूरा पर्पस इसलिए है क्योंकि पब्लिक की स्लो है, पब्लिक की फास्ट होती है, तो मुझे इतना सब करना ही नहीं पड़ता। मुझे Okay. चाहिए प्राइवेट की इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक की, पर उसमें की एक्सचेंज कैसे होगा, वो की एक्सचेंज का ही ये पूरा प्रोसेस है, करेक्ट। इसी फॉर्मेट में सेंड करता है वो। हाँ, तो क्या करता है कि मेरा कौन सा वर्जन है, TLS 1.1 में क्या क्या साइफर सपोर्ट करता हूँ, TLS 1.2 में क्या क्या सपोर्ट करता हूँ। क्लाइंट ने भेजा, सर्वर ने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट देखा, साइबर सूट ने सेलेक्ट किया, ये सर्वर का चॉइस है, वो बेस सेलेक्ट करता है, और उसके बाद अपनी स्ट्रिंग, तो ABC XYZ दोनों के पास चली गई। ओके। स्टेप में क्लाइंट ने उसका सर्टिफिकेट वैलिडेट किया, क्लाइंट वैलिडेट द सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंड दी सर्वर पब्लिक की via CA, करेक्ट। स्टेप 3 में उसने सर्टिफिकेट वैलिडेट किया, उसके पास की आ गई। अब स्टेप 4 मैंने छोड़ दिया, इस ऑप्शनल स्टेप है, करेक्ट। स्टेप 5 में चलते हैं, सॉरी स्टेप 3 भी छोड़ दिया, स्टेप 3 स्टेप 4 छोड़ दिया। रवि, क्लाइंट ने यहाँ, आपकी स्क्रीन फ्रोजन है गूगल के ऊपर ही। ओ ऐसा क्यों है, वापस शेयर करता हूँ, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। अब दिख रहा है स्ट्रिंग, मेरा वो PPT दिख रहा है। यस, अभी दिख रहा है। तो वापस क्विकली, क्लाइंट ने भेजा है मेरा सपोर्ट का वर्जन साइफर सूट और ABC, सर्वर ने भेजा डिजिटल सर्टिफिकेट XYZ, और जो सपोर्टेड सूट, दोनों के पास ABC XYZ है। स्टेप 2 में ही क्लाइंट ने CA के पास गया और उसका सिग्नेचर वैलिडेट करके पब्लिक की एक्सटेंड कर ली। स्टेप 3 स्टेप 4 ऑप्शनल है, तो वो मैं आ नहीं रहा हूँ, स्टेप 5 पे चलते हैं, है ना। तो टाइम बिंग ये 3 स्टेप काट ही देते हैं, क्योंकि वो स्टेप कब आएगी मैं एंड में बताऊंगा। ये 3 स्टेप अभी तक, ये 3 स्टेप काट दी, ठीक है। तो स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में क्या है, क्लाइंट सेंड की इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड विद सर्वर की। यहाँ क्लाइंट ये जो प्री मास्टर की है, तो क्लाइंट 2 की इशू करता है, एक तो ABC करता है और प्री मास्टर की करता है। सर्वर सिर्फ एक की यूज इशू करता है, XYZ। Now client encrypt one more random key this known as pre-master with the server's public key and share to the server। तो यहाँ पे ये 1 2 3 को
इंक्रिप्ट करेगा सर्वर की पब्लिक की से, करेक्ट? सर्वर की पब्लिक की से करेगा, सर्वर की प्राइवेट की से करेगा ये क्लाइंट? पब्लिक की, प्राइवेट की तो पता ही नहीं करेक्ट, हाँ, पर प्राइवेट की तो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर में काम आती है। तो सर्वर की पब्लिक की जो उसको कहाँ से मिली, किस स्टेप में मिली पब्लिक की सर्वर की? सेकेंड स्टेप। सेकंड स्टेप में। उसको करके 1 2 3 भेज देगा। तो 1 2 3 इसके पास भी, अब एबीसी XYZ 1 2 3 यहाँ पे भी है, एबीसी XYZ 1 2 3 यहाँ पे भी है, पर उसने तो 1 2 3 भेजा नहीं, उसने इंक्रिप्टेड भेजी थी। उसको 1 2 3 कहाँ से मिलेगी? क्योंकि उसके पास उसकी ओन प्राइवेट की है तो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इसको एबीसी 1 2 3, अब यहाँ जो अटैकर है उसके पास एबीसी XYZ थी पर ये की नहीं थी, क्योंकि ये तो सर्वर की प्राइवेट की है। तो उसको 1 2 3 नहीं मिलेगी, उसको एबीसी XYZ मिलेगी। सर्वर और क्लाइंट के पास तीन है। अब दोनों जो ने जो साइफर सूट सेलेक्ट किया, उससे वो दोनों अपनी वो की जनरेट, नाउ बोथ जनरेट द सेशन की, द सेम साइफर सूट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सी, सर्वर सी एंड प्री मास्टर, करेक्ट? तो दोनों के पास साइफर सूट पहले से डिसाइडेड हो चुका है और उन्होंने ए बी एक 1 2 XYZ दोनों ने बना ली है। और एक फिनिश मैसेज जाता है, और जो फिनिश मैसेज होता है वो सर्वर उस नई सिमेट्रिक की के द्वारा इंक्रिप्ट करके भेजता है, ए बी एक 1 2 XYZ के द्वारा, और क्लाइंट के पास वो भी जनरेट है। तो क्लाइंट उस फिनिश मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है और सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, दोनों के पास की एक्सचेंज हो चुकी है। और जो रिकॉर्ड स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें वो मैसेज भेज सकता है विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्टेड विद दैट की। सो फार सो क्लियर? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें क्वेश्चन के आंसर आने 7th और चाहिए 8th कुछ। स्टेप आप वापस बताएंगे एक बार? जो इनक्रिप्ट किया है इसने किस जो सेशन आईडी बनी थी उससे किया था क्या? हाँ नहीं, एक फिनिश मैसेज भेजा, जो जो सेशन की बनी है, सेशन की बनी ए सेशन। बी ओके। एक्स ए बी 1 2 X, क्योंकि वही तो की एक्सचेंज करनी है। तो की तो एक्सचेंज हो गई है, पर ये कैसे इंश्योर करेंगे कि दोनों ने की सेम बनाई है? तो मैंने उस की के थ्रू मैसेज भेजा, फिनिश मैसेज इनक्रिप्ट करके, और वो सिमेट्रिक की में दोनों के पास की सेम होती है, उस की मदद से उसने डिक्रिप्ट कर लिया। तो की कंफर्म हो गया कि दोनों के पास की सेम हो गई। अब जो भी मैसेज होगा वो टीएलएस रिकॉर्ड में इंक्रिप्ट होके जाएगा इंक्रिप्शन के थ्रू। ओके, यहाँ पे सिमेट्रिक की से अब होगा इनक्रिप्शन, ठीक है। हाँ, अब जो भी सो फार सो क्लियर। कोई डाउट हो पूछ लो, क्वेश्चन पूछूंगा उसमें उसमें आंसर आने चाहिए। 5 क्वेश्चन कम से कम इससे आएंगे। कोई डाउट है इसमें? नो। ठीक है अभिषेक, अर्पित, As of now, fine. Let's see. तो ठीक क्लियर है, है लेट्स यार। सी। ठीक है अर्पित, आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट। सो हम थोड़ा एनोटेशन हटा देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। The part of TLS which protocol handles the actual secret management. It's a handshake. इसलिए मैंने पूछा। हैंडशेक हमेशा क्या करता है? हैंडशेक की एक्सचेंज करता है, पर ट्रांसफर ऑफ द डेटा हमेशा होता है रिकॉर्ड स्टेप में। So this we have seen. Yeah, Handshake used to set up key, but the exchange of the message. So again there will be 5 questions. वहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे concept wise. Understand these slides again, revise करना। Next question पे चलते हैं। The answer is the, और वो ऐसे भी ऑप्शन देंगे आपको, ट्रांसफर बड़ा इजी लगेगा। You always go with the transfer option, but it's a record step. The keyword is record. Keyword is not a transfer. Okay. Okay. There is no negotiation keyword here. Handshake and record, those are keywords. Next questions to Abhishek now. Hmm. Transport layer TLS provide. C, confidentiality and integrity Correct. So that's correct. communication. So privacy security तो एक ही word है. There is no difference in this one. Enhancement कहीं होता नहीं है, optimizations में होता नहीं है. तो main purpose is to assure the confidentiality and integrity, ताकि कोई read ना कर सके और कोई modify ना कर सके data. तो ultimate purpose हम यही चाहते हैं कि सर्वर से डेटा ब्राउजर पे जाए, सिक्योर डेटा, आपका पासवर्ड, आपका बैंक बैलेंस, कुछ भी इंफॉर्मेशन जाए, एटलीस्ट बीच में कोई ना पढ़ पाए ना उसको मॉडिफाई कर पाए। दिस इज टू यू कार्तिक।
Karthik, can you hear me? Asymmetric key. Which one? What is the answer? B option. Again, Karthik, this is not correct. So TLS use always they set up a new symmetric key for each connection. The purpose is that we need to have every time we need a symmetric key. So if the handshake, what we are doing, the handshake to set up a symmetric key. The purpose of whole handshake is just to have a symmetric key. So whenever there is a new connection happen, we always set up a new symmetric key. Right. इसलिए बहुत tricky questions है, but basic questions है, concept wise इसको read them properly, think before giving the answer. This is to you, Arpit. So, transport. It's B X509 certificates. Correct. So they use X509 certificate to authenticate a connection and then create a secret. This is to you, Abhishek. The transport layer protocol creates a secure communication channel over public media. It's typically, in a typical SSL, who initiate the protocol. TLS session. The server. इसलिए कहता हूँ, देखो क्लाइंट ने भेजा, सबसे पहले हेलो किसने भेजा? अच्छा, मैं तो TLS लास्ट में जो सेशन बना रहा था ना उसका सोच रहा था। हाँ, इसमें पढ़ो, इसमें वापस पढ़ो। So transport में secure में in a typical TLS session who initiate the protocols? Protocols जब initiate हुआ TLS protocol, तो किसने initiate वो किया? तो तो सर्वर। क्लाइंट ने करा था। मैं थोड़ा हाँ, डीप में क्लाइंट। जाके सोचा कि लास्ट में जो हाँ तो की डिसाइड हुआ। अच्छा, तो वो नहीं है, मतलब इनिशिएट में हमेशा क्लाइंट ने स्टार्ट किया क्लाइंट है। हाँ। और दूसरा क्या है कि हाँ, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में देखे, बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आप आंसर दे पाओगे। इससे कंसेप्ट रिवाइज करना, एक एक स्लाइड में एक एक कीवर्ड में वहाँ क्वेश्चंस आएंगे वहां से। दिस टू यू, कार्तिक। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कभी हमने अभी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखा है क्या हमने वहां पे ऊपर फ्लो में? PKI देखा है, लेकिन मतलब तो समझ PKI नहीं से आया। हम ट्रस्ट बन रहा है ना। मैं एक सर्वर को ट्रस्ट कैसे कर रहा हूँ? उसके पब्लिक की सर्टिफिकेट से। उसका पब्लिक की सर्टिफिकेट में सीए के पास जा रहा हूँ और सर्टिफाइड मिल रहा है, तभी तो हम ट्रस्ट करके उसको अगला मैसेज भेज पा रहे हैं। नहीं तो मैं उसको अगला मैसेज भेजता ही नहीं। तो हु इज एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज? इट इज PKI। और हमने वो स्टेप छोड़ दी थी। चलो, सर्वर भी क्लाइंट पे कैसे ट्रस्ट कर रहा है? क्लाइंट से सर्टिफिकेट मांग रहा है और सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर रहा है सीए से, पब्लिक PKI के थ्रू। तभी तो वो क्लाइंट पे ट्रस्ट कर रहा है कि क्लाइंट ट्रस्टेड क्लाइंट है। सर्वर वो ट्रस्ट कर रहा है कि ट्रस्टेड सर्वर है। तो PKI हेल्पिंग देम टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। यस। ये ऐसे नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिली मिस्टेक होते हैं। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, उसको समझना कि जो जो आंसर जो पढ़ाया ही नहीं है वो आंसर कभी नहीं हो सकता। यदि मैंने मल्टी फैक्टर इसमें TLS में पढ़ाया ही नहीं तो ये आंसर होगा ही नहीं। फिर इन्हीं में से आंसर होगा जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं। This is Okay. to you. This is to you, Arpit. Service improvement of all following object storage. Okay. Object storage encryption. In the infrastructure as a service management, all the following are example of object storage encryption. It's a DTLS. Correct. This is very tricky question. So TLS हमेशा डेटा इन मोशन में होना चाहिए। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज और डेटा इन रेस्ट का केस है, वहां पे AES यूज होता है, असिमेट्रिकल होता है। तो TLS तो कभी यूज नहीं हो सकता। तो पहले ही ऑप्शन वहां पे 100% लोग कीवर्ड देखते हैं कि TLS तो पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में TLS मार देते हैं। दिस वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने
शुरू में जब मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, मैंने टीएलएस आंसर टिक किया जब सैंपल एक्सरसाइज कर रहा था बुक सैंपल क्वेश्चंस की। तो ऑलवेज दे विल मेक श्योर कि आपने कीवर्ड पढ़ा है पर वो कीवर्ड उसमें वैलिड है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज हमेशा एईएस यूज करता है, अदर भी यूज कर सकता है, इंडस्ट्री एईएस यूज करता है, बट टीएलएस कभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा डेटा इन मोशन है। करेक्ट। बेसिकली इसमें जो एक्सेप्ट है वो कीवर्ड है, उसको छोड़ हाँ के जो भी। हाँ, तो टीएलएस तो हो ही सकता है कि आपने देखा टीएलएस हमेशा डेटा इन रेस्ट कभी नहीं हो सकता, और डेटा इन मोशन है, और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हमेशा डेटा इन रेस्ट में आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट अभिषेक के लिए। If a customer enroll for multiple availability zone and want to replicate application data to different availability zone, should help. ये फास्ट ही हो रहा था डीएन। मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने बताया कि अभिषेक जो जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो एक तो वो मैं पूछूंगा नहीं। एक तो दूसरा क्या था, कई सारी चीजें में क्वेश्चन कॉमन सेंस पे पूछते हैं, वो बुक इसलिए पढ़ो, कॉमन सेंस पे आना चाहिए। डेटा रेप्लिकेशन डेटा इन मोशन है, वहां पे डीएनएससीसी का काम ही नहीं आएगा, वहाँ टीएलएस ही काम आएगा। और यही हम चीज देखना पड़ेगा कि हमको जो यूज केस पूछा गया है वो किस कैटेगरी में आता है। तो कस्टमर को अवेलेबिलिटी जो हमारे रीजन्स होते हैं उसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उसमें डेटा रेप्लिकेशन करना है तो हमेशा वो सिक्योर करना है, क्योंकि हमने देखा है कि डेटा रेस्ट में रखना है तब भी सिक्योर रखना है, डेटा मोशन में रखना है तब भी सिक्योर रखना है, और डेटा मोशन में रखने का सिक्योर रखने का एक ही तरीका है और वो है टीएलएस। डीएनएससीसी में पढ़ा हुआ, वो डीएनएस मैचिंग फेचिंग के लिए जब किसी वेबसाइट में आप हिट करते हो www.xyz.com, उसका आईपी एड्रेस निकालने के लिए। अवेलेबिलिटी जोन में आईपी एड्रेस वाला काम ही नहीं है, आपकी इंटरनल अवेलेबिलिटी जोन से हर रीजन्स के। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ट्रिकी आएंगे इस टीएलएस से, इसको रिवाइज करना आज, फिर कल फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। ये कार्तिक तुम्हारे लिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, फिर कल देखते हैं, आज टाइम भी हो गया। Encryption and TLS. ओके, सो डेफिनेटली इंक्रिप्शन एंड टीएलएस ऑप्शन है, और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए हमेशा इंक्रिप्शन यूज करना चाहिए। पर यही क्वेश्चन दो बार अलग अलग तरीके से एक उसमें बुक्स में पूछा जाता है। जब वो लॉक्स के बारे में बात करता है, करेक्ट ना, व्हेन ही आस्क अबाउट द लॉक्स, और यदि वो कॉन्फिडेंशियल लॉक्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कोई पढ़ भी ले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बोले तो हम इंक्रिप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम टीएलएस जाएंगे। पर वो कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लिसिटली बोले कि हाउ टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लॉक्स, तब हम इंक्रिप्शन अलग से लगाएंगे, अदरवाइज टीएलएस इंक्रिप्शन देता है। पर फिर भी हम इंक्रिप्शन एंड टीएलएस यूज करेंगे अनटिल अनलेस यदि वो कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लिसिटली बोले। पर यदि वो सिर्फ ये बोले इफ यू वांट टू सेंड ए लॉक्स टू वेयर व्हाट इज योर सजेशन, तब हम किस पे जाएंगे, टीएलएस पे। तब हम एक ऐसा मेथड यूज नहीं करेंगे जो मोर कॉस्टलियर है, मोर सिक्योर है, क्योंकि वो लॉक्स इतने सिक्योर जरूरत नहीं है जाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर इंक्रिप्शन एंड टीएलएस है। पर यदि एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज योर सजेशन टू सेंड द लॉग्स, तो क्या सेलेक्ट करना है, टीएलएस सेलेक्ट करना है। Okay. ओके, ठीक है, ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था आज के लिए। हम ऑलमोस्ट ओवर द टाइम भी हो चुके हैं, सबको ऑफिस चालू करना है।